ये अन्येषु विद्यन्ते पात्रेषु पिबतो जनान् ये पदां प्रतिरक्षय ऐरवृदायव्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाकुन्दो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषां सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं पातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर् दश दक्षिणा दश प्रतीचीर् दशोदीर्घीर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृळयन्तु ते यं विष्णो यश्च नो वेष्टितं भोजं भेदधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रा विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु एते सहस्रमयितं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व तमुष्टु हि यस्विषु सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशौ मनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमसुरं नुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व सा ईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अनिशं मया दासोऽहमिति मां मत्वा क्षमस्व सा ईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष सा ईश्वर हरिः ओं तत्सत् श्री सा ईश्वरार्पणमस्तु। ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ 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 ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्।
मुक्ति प्रदायिनी प्रेम प्रदायिनी शांति प्रदायिनी माँ मुक्ति प्रदायिनी प्रेम प्रदायिनी शांति प्रदायिनी माँ मुक्ति प्रदायिनी
शांति प्रदायिनी मां जननी मां जननी जग जननी साई मां जननी मां जननी जग जननी साई जननी मां जननी जग जननी साई मां जननी मां जननी जग जननी साई दया करो साई जय मां दया करो साई मां मुरलीधरा मुरहरा
वृंदावन संचार जय गोधारा यशोदा गाया घुमाया यशोदा गाया घुमाया मुरारा गुरुदेवा रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा रघुपति राघव
पतित पावन पतित पावन रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा पतित पावन पतित पावन राम राम जय राजा राम राम जय राजा राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय साई राम रघुपति राजा रघुपति राघव राजा Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
शतकोटि नमन साई राम, साई राम, साई राम, साई राम। शतकोटि नमन साई राम, साई राम, साई राम, साई राम। शतकोटि नमन साई राम, साई राम, साई राम, साई राम।
शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा साई राम। शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा साई राम। शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा साई राम। शिव महेश्वरा साई राम। शिव महेश्वरा शिव शंकरा शिव महादेवा साई राम। शिव महेश्वरा शिव शंकरा शिव महादेवा साई राम। कैलासवासा महादेवा कैलासवासा महादेवा। जगदीश्वर हर महादेवा। जगदीश्वर हर महादेवा। त्रिभुवन पाल महाचारी देवा। त्रिभुवन पाल महाचारी देवा। त्रिभुवन पाल महाचारी देवा। महेश्वरा शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा साई राम। शिव महेश्वरा शिव शंकरा शिव महादेवा साई राम। शिव महेश्वरा शिव शंकरा शिव
शिव महादेवा साई कैलासवासा महादेवा जगदीश्वर हर महादेवा त्रिभुवन भार्गव महादेवा त्रिभुवन भार्गव महादेवा महेश्वरा शिव महेश्वरा शिव महेश्वरा साई राम राधे श्याम हे घनश्याम
नंदनंदना गोविंदा गोविंदा नंदनंदना गोविंदा नंदनंदना गोविंदा नवनीत चोला गोविंदा नवनीत चोला गोविंदा नवनीत चोला गोविंदा नवनीत चोला गोविंदा नारदा प्रिय गोविंदा नारदा प्रिय गोविंदा नारदा प्रिय गोविंदा नारदा प्रिय गोविंदा नट जनपाला गोविंदा काला गोविंदा नट जनपाला गोविंदा काला गोविंदा नारायण गोविंदा नारायण गोविंदा नारायण गोविंदा नारायण गोविंदा गोविंद गोकुल नंदन गोविंदा गोविंद गोकुल नंदन गोविंदा गोविंद गोकुल नंदन गोविंदा राधे श्यामा रे घनश्यामा राधा माधव मंगल धामा राधे श्यामा रे घनश्यामा गोविंदा काला गोविंदा नारायण गोविंदा गोविंद गोकुल नंदन गोविंदा प्यारे नयन हमारे साई हमारे ओ प्यारे नयन हमारे साई हमारे आओ प्यारे नयन हमारे साई हमारे आओ प्यारे नयन हमारे साई हमारे आओ तुम बिन कोई नहीं रखवाए तुम बिन कोई नहीं रखवाले तुम बिन कोई नहीं रखवाए तुम बिन कोई नहीं रखवाले तुम बिन कौन सहारे बाबा तुम बिन कौन सहारे बाबा तुम बिन कौन सहारे बाबा तुम बिन कौन सहारे तुम बिन कौन सहारे तुम बिन कौन सहारे तुम बिन कौन सहारे बाबा तुम बिन कौन सहारे आओ साई प्यारे आओ साई प्यारे आओ साई प्यारे आओ साई प्यारे आओ प्यारे नयन हमारे साई हमारे आओ प्यारे नयन हमारे हमारे आओ तुम बिन कोई नहीं रखवाए तुम बिन कोई
कौन सहारे आओ साईं प्यारे, आओ साईं प्यारे, आओ साईं प्यारे, आओ साईं प्यारे साईं हमारे आओ, साईं हमारे आओ साईं हमारे आओ, साईं हमारे आओ साईं हमारे आओ, साईं हमारे साईं हमारे आओ। नित स्मित सुंदर मुखार बिंदा नाचो स्मित सुंदर मुखारविंदा नाचो नंदलाला नंदलाला नाचो नंदलाला नंदलाला नाचो नंदलाला नंदलाला नाचो नंदलाला नंदलाला मीरा के प्रभु लाला नंदलाला मीरा के प्रभु लाला नंदलाला मीरा के प्रभु लाला नंदलाला 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 नित्य नित्य सुंदर मुखारविंदा नाचो नंदलाला नंदलाला नाचो नंदलाला नंदलाला नाचो नंदलाला नंदलाला नाचो नंदलाला नंदलाला मीरा के प्रभु लाला नंदलाला मीरा के प्रभु लाला नंदलाला मीरा के प्रभु लाला नंदलाला नाचो नंदलाला नंदलाला गोविंदा नाचो नंदलाला नंदलाला हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा
Hare Krishna, Hare Krishna. विठ्ठल हे पांडुरंगा पांडुरंगा नंदकिशोरा गोपाला श्याम गोपाला गोपाला श्याम गोपाला मदन गोपाला श्याम गोपाला मदन गोपाला विठ्ठल जय पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठल जय पांडुरंगा पांडुरंगा हरे कृष्णा विठ्ठल जय पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठल जय पांडुरंगा पांडुरंगा नंदकिशोरा श्याम गोपाला श्याम गोपाला मदन गोपाला श्याम गोपाला मदन गोपाला विठ्ठल जय पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठल जय पांडुरंगा 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 विठ्ठल जय पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठल जय पांडुरंगा पांडुरंगा प्रेम से गाओ मंगल नाम प्रेम से गाओ मंगल गोविंद गोपाल बोलो हरे श्याम गोविंद गोपाल बोलो राधे श्याम गोविंद गोपाल बोलो हरे श्याम गोविंद गोपाल बोलो राधे श्याम प्रेम के सिंधो दीन के बंधो दीन के बंधो प्रेम के सिंधो दीन के बंधो प्रेम के सिंधु दीन के बंधो करुणामय साई नयन अभिरामा करुणामय साई नयन अभिरामा गोविंद गोपाल बोलो हरे श्याम
गोविंद गोपाल बोलो राधे श्याम प्रेम से गाओ प्रेम से गाओ मंगल नाम गोविंद गोपाल बोलो राधे श्याम प्रेम के बंदो प्रेम के बंधो के बंधो करुणामयो नयन विरामा नयन विरामा गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल बोलो राधे श्याम गोविंद गोविंद गोपाल बोलो राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम साई राम साई हरे राम कृष्ण हरे राम साई राम हरे कृष्ण हरे राम साई राम साई राम साई राम साई राम हरे कृष्ण हरे राम साई राम साई हरे राम राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई साई राम राम साई राम साई राम साई साई राम राम साई राम हरे कृष्ण हरे राम साई राम साई राम हरे राम साई राम साई राम हरे कृष्ण हरे राम साई राम साई हरे राम राम साई राम साई राम साई राम साई राम राम साई राम साई राम साई साई राम राम साई 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 राम ॐ तत्सत् श्रीनारायण पुरुषोत्तम गुरुतो सिद्धबोधतो सन्तविनायक सविता पावकतो सविता पावकतो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् शान्ति
Om Shri Sai Ram. We'll now be having today's message, after which we will be offering Aarti. Kindly leave in silence. Jai Sai Ram. Offering my humble pranams at the lotus feet of Bhagavan. Revered elders, sisters, and brothers, Sai Ram. Let me begin today's message with words from Swami's discourse 40 years ago. The astonishing progress of science and technology has not brought with it the corresponding powers of discrimination and wisdom. Man must realize that the sense organs through which he explores the external and discovers the powers of the physical universe function because of the divinity with which is immanent in them. Without the power of the divine, the eyes cannot see, the ears cannot hear, nor will the mind be able to think. If I were to ask how many of us today do not carry a mobile device, one would hardly expect a yes. It's interesting because the mobile device and other wearables so surround our life today. One wonders what is our relationship with them. For instance, my wife thinks that the mobile device is my stepwife. And judging by the reaction, I think the sentiments are shared. But as Swami says, these devices are an extension of our senses, that is all. Technology is a child of science, and science is a study of the creation as we know. Where science ends, spirituality begins. Now, what is Swami's take on computers? Let me share an anecdote from 1992. After darshan, Swami completed his interviews and then stepped onto the veranda where the students were seated. So he was speaking to a family of 3 brothers from school, and he asked the youngest one, "What's your future plan? Do you want to become a doctor, an engineer, or a manager?" So the boy replied, "Swami, I want to become engineer." "Oh, which discipline?" So the boy replied, "Swami, I like computers." So Swami said, computers, everyone seems to be running behind computers these days. What is so special about computers? It is rather the person behind design of the computer who should be valued and given importance to. So he gave an example of a farmer from Hyderabad who cultivated grapes in his 2-acre farm. Now, he made multiples in profits from selling the produce. But seeing all this, all other farmers nearby also started growing grapes. Now, because of oversupply, the prices crashed. So Swami says, even computers are becoming like that these days. It should rather be the man who should be given that importance, who actually decides the price of these items. Man is in fact more valuable than all the so-called wealth in this world. So, what should be our relationship with technology and these devices? During the inaugural years of the MBA program in Patti, Swami delivered a series of talks to students which were compiled into a book called Man Management that is studied today. So here Swami says, computer is an artificial electronic device, but in today's world, it is more often used for undesirable things. Now, he was referring to internet here. Hence, we should first discriminate on these 4 lines. Number 1, is it going to be useful to us? Number 2, is it
going to affect our work or our business? Number three, is it going to affect our human nature? And number four, is it going to affect our inherent divinity? Now, human beings themselves are a computer, Swami says, since all the possible knowledge resides within the man. In fact, a computer or an AI depends on the inputs with which it was trained. Now, if it is serving the benefit of these four questions, then yes, it must be put to use. But we should not become a slave to technology and think that this mobile phone is indispensable. The reality today is that we have reduced using our cognitive capabilities. Simple example would be if we were to be asked to multiply a pair of three-digit numbers, we find it more convenient to use a mobile phone rather than use our brain. So Swami says that technology is not harmful, but we should learn to use it only when it is needed. We should rather learn to depend on our conscience. Now, speaking of need, there was this exchange between Professor Anil Kumar and Swami, where Professor Anil Kumar says, Swami, sometimes desires also can become necessities. So Swami, what? So then he explained, no, Swami, I mean, mobile phones at one time were a luxury, but now it has now become a necessity. So Swami rebuked him. No, that is our mistake. We should really inquire on what is needed. Desires should not be allowed to become a necessity. As we leave this center, let us pray. In this times of rapid technological changes, may Swami guide us every moment to apply the sciences as a useful tool to reflect inward and progress in our spiritual journey. As Swami says, Sai means see always inside. Likewise, the AI or this artificial intelligence should also enable us in our mission to please our Sai. Jai Sai Ram. Sir. Om Jai Jagadish Hare Swami Satya Sai Hare Bhakta Jana Samrajaka Bhakta Jana Samrajaka Pati Hare Om Jai Jagadish Narayana
Shanti, Shanti, Shanti. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं नमस्करामि। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं नमस्करामि। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं नमस्करामि। बाबा विभूतिं नमस्करामि। सत्य साई बाबा विभूतिं नमस्करामि। Shanti.